Hello 10th class student. Today I am going to teach you exercise 3.7 of NCERT book optional chapter. First of all, welcome to all for online teaching by UP Singh. So let us see the question first. The ages of two friends Ani and Biju differ by 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. Let us see answer of this question. Let the present age of Ani is equal to x year and the present age of Biju is equal to y years. According to question, the difference of age of these two is given 3 years. Therefore, here the equation first will be x minus y is equal to 3. Let this is the equation number 1. In next step, here given that Dharam is twice as old as Ani. So age of Ani's father Dharam is equal to 2 into Ani's age according to your question. Because here the age of Dharam is given that the twice of age of Ani. So therefore Dharam's age equal to 2x years. Okay. Again, in next step, here given that Biju is twice as old as his sister Kathy. So let us see in next step. Again, Biju's age is equal to 2 into Kathy's age. Here the Biju age is y. Let us see here y. So y equal to 2 into Kathy age. So therefore Kathy age is equal to y by 2 years. Okay. Now according to questions, once again here given that the ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. So here the ages of Kathy and Dharam both differ by 30 years. Therefore 2x minus y by 2 is equal to 30. Okay. Take LCM 2. Then it will be 4x minus y is equal to 30. So therefore second equation will be here 4x minus y equal to 60. Understood? Here the first equation is x minus y is equal to 3 and second equation 4x minus y equal to 60. Now subtract here because here I am going to use elimination method. Okay. So change here sign, minus, plus, minus. This plus minus will be cancelled. Minus 4x plus x will be minus 3x is equal to minus 60 plus 3, it will be minus 7. Therefore x is equal to 90. ठीक है. Putting x in equation first we get. So first of all write the equation first. X minus y equal to 3. This is the equation number first. Now put the value of x 19 minus y equal to 3. So y equal to 19 minus 3 equal to 16. Hence present age of Ani is equal to 19 years and present age of Biju equal to 16 years. So this was the end of this solution of this question. Here the second question.
For the same chapter, let us see. One sage, give me 100, friend. I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me, what is the amount of their capital? Let us see answer of question number 2. Here student, there are two friends talking to each other. Let us see. Here first friend and second friend. फर्स्ट फ्रेंड ने सेकेंड फ्रेंड से बोला कि यदि तुम मुझे 100 रुपीज़ दोगे, ठीक है, तो मेरा जो मनी है तुमसे डबल हो जाएगा। मैं इसे ग्राफिक्स के द्वारा दिखा रहा हूँ। उससे पहले देखो, लेट फर्स्ट फ्रेंड हैज ₹X एंड सेकेंड फ्रेंड हैज ₹Y। यदि सेकेंड फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपीज़ देता है तो क्या होगा, फर्स्ट फ्रेंड्स के पास x प्लस 100 रुपीज़ हो जाएगा और सेकेंड फ्रेंड के पास y माइनस 100 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, नाउ लेट द मनी ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू ₹X एंड द मनी ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू ₹Y. Now according to question, money of first friend is equal to 2 into money of second friend. Okay, so money of first friend is here x plus 100 is equal to 2 into y minus 100, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फ्रेंड को सेकेंड फ्रेंड ने 100 रुपीज़ दिया था, इसीलिए इसका जो मनी है x प्लस 100 हो जाएगा और इसके पास जो मनी है y माइनस 100 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में यह कंडीशन हो रहा है। ओके, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100, देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300. Let this is the equation number first. Again in second step, here in second step the other friend replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Okay, so let us see once again by graphics. Here first friend and here second friend. First friend has money ₹X and second friend has money ₹Y. ओके, अब क्या हो रहा है कि सेकेंड फ्रेंड ने फर्स्ट फ्रेंड से बोला कि यदि तुम मुझे 10 रुपीज़ दे दो, देखो मैंने ग्राफिक से दिखाया है, 10 रुपीज़ दे दो तो मैं तुमसे 6 टाइम्स ज़्यादा रिच हो जाऊंगा मनी के मामले में। यहाँ मैंने ग्राफिक से दिखाया है, देखिए इसके पास x रुपीज़ है, जब यह 10 रुपीज़ इसको दे देगा तो इसके पास कितना रुपीज़ बचेगा, x माइनस 10, और इसके पास कितना हो जाएगा y प्लस 10। अंडरस्टूड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मनी ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू 6 इंटू मनी ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ओके, so therefore y plus 10 is equal to 6 into x minus 10, y plus 10 is equal to 6x minus 10. Sorry, here will be 60. Okay, so this imply 6x minus y is equal to 60 plus 10, 6x minus y equal to 70. Let this is the equation number second. And first is here x minus 2y equal to minus 300. Now apply the method of elimination for solving x and y. Okay, for elimination method, look at here, I am going to eliminate
वाई हियर, यहाँ पर क्या है कि इसमें 2y है और यहाँ 1y है। ओके, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों का डिजिट सेम हो जाएगा। यही है एलिमिनेशन मेथड, से एलिमिनेट करना, किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को, डिजिट वाला वैल्यू को सेम कर देते हैं। ओके, तो 2 इंटू 6 इट विल बी 12x माइनस 2 इंटू माइनस वाई इट विल बी माइनस 2y इज इक्वल टू 70 इंटू 2 इट विल बी 140। Here will be as usual x minus 2y equal to minus 300. Again change the sign here. Here will be minus, this will be plus, and this will be also plus. This minus 2y and plus 2y, that will be cancelled. Okay, then 12x minus x is equal to 11x is equal to 440. 140 plus 300, what will be result? 440. Therefore x is equal to 40, because here x is equal to 440 by 11, then it will be cancelled by 40 times. Okay, putting x is equal to 40 in equation first, we get here the equation first is x minus 2y is equal to minus 300. Now put the value of x here 40. 40 minus 2y equal to minus 300. This implies minus 2y equal to minus 300 minus 40. When you transpose this number this side, then the sign will be minus 40. So minus 2y is equal to minus 340. Therefore y equal to 170. 170. Look at here. Hence first friend keeps money rupees 40 and second friend keeps money rupees 170. Understood? Here the third question from the same chapter, chapter number 3.7 of NCERT book is: a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. Let us see the answer of this question. First of all, student, let the speed of a train is equal to x km per hour and time taken by a train is equal to y hours. Okay, so according to formula, distance is equal to speed into time. Here the speed is x and time is y, so distance will be covered by train. Here will be xy kilometer. Understood? Now according to question, if the speed of train have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less. Now according to question, here the speed of train equal to x plus 10 km per hour and time taken is equal to y minus 2 hour, because here स्पीड इंक्रीज 10 किलोमीटर. अगर स्पीड ट्रेन का बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली टाइम कम लगेगा. सो हियर द टाइम इज y माइनस 2. सो देयर फॉर वंस अगेन यूज फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. हियर द स्पीड x प्लस 10 एंड टाइम y माइनस 2, बट डिस्टेंस विल बी कॉन्स्टेंट, इट विल नेवर चेंज. ओके, सो डिस्टेंस विल बी एज यूजुअल xy. फ्रॉम हियर इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस राइट डाउन xy. डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. स्पीड बढ़ जाएगा तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वही सेम डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस एज यूजुअल रहेगा. अंडरस्टूड? यू बेटर अंडरस्टैंड. ओके, सो xy इज इक्वल टू x इंटू वाई, इट विल बी xy minus x minus 2, it will be minus 2x plus 10y. 10 into minus 2, it will be minus 20. This xy cancel. Here the equation
will be minus 2x plus 10y equal to 20. Take as a common minus 2, then it will be x minus 5y equal to 20. Therefore, here the equation x minus 5y is equal to minus 10. Let this is the equation number first. Again, according to second step of question, here the question in second step is saying that if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more time. So look at here. Now speed of a train is equal to, according to question, will be x minus 10 km per hour and time taken will be y plus 3 hour. Okay. Again find distance by the same formula. Distance equal to speed into time. Distance will be as usual, it will never change. Okay. So in place of distance write down xy. Here the speed x minus 10 into y plus 3. Then the equation will be here x into y, xy, x plus 3, it will be plus 3x minus 10y and minus 10 into 3, it will be minus 30. So equation will be here 3x minus 10y is equal to 30. Let this be the equation number second. And first equation we have already got it, x minus 5y equal to minus 10. Again use here elimination method. So eliminate here x, so multiply first equation by 3, then it will be here 3x minus 15y equal to minus 30, and second equation will be as usual. Okay. Again change the sign, minus plus plus, this 3x plus and minus will be cancelled, minus 10y plus 15y, it will be 5y equal to 60. Therefore y equal to 12. Understood? Now putting y equal to 12 in equation first we get. So first of all write down the equation number first. X minus 5y equal to minus 10. X minus 5 into 12, in place of y put here 12, is equal to minus 10. X minus 60 is equal to minus 10. X is equal to minus 10 plus 60 is equal to 50. Hence speed of a train is equal to 50 km per hour. Time taken is equal to 12 hours. Therefore distance covered by a train equal to xy. We have already to find it. So in place of x put here value of x 50, and in place of y put here 12. 15 to 12, the distance total covered by train 600 km. Next question, question number 4. Very important question for all of you. Look at here, how can you do this? The student of a class are made to stand in row. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in row, there would be 2 rows more. Find the number of students. Let us see how can you solve this question. Here I have taken 3 rows. 1, 2, 3. Look at here, 1, 2, 3. ओके, मैंने यहाँ 3 रो लिया है और प्रत्येक रो में 4 स्टूडेंट को खड़ा कर रहा हूँ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 12 होगा. कैसे? नाउ लेट हियर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू हियर 3. मैंने 3 लिया है, 1, 2, 3 लिया है. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना मैंने खड़ा किया है? 4. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो. तो नंबर ऑफ रो कितना है? 3 है. तो 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्टूडेंट टोटल 12 हो जाएगा. जो मैंने ग्राफिक्स दिखाया है उसके अनुसार. नाउ लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x एंड
number of student in each row is equal to y. So therefore total number of student is equal to xy. xy कैसे होगा मैंने ऊपर समझा दिया है ग्राफिक्स के माध्यम से. ओके. Now according to question, here if 3 students are extra in a row, then 1 row is less. Okay. So look at here, number of student is equal to, here will be number of student in each row plus 3, क्योंकि number of student 3 बढ़ जा रहे हैं, मल्टीप्लाई number of rows माइनस 1. तो जैसी अगर स्टूडेंट की संख्या आप बढ़ा देंगे तो वहाँ पर जो पहले से फिक्स रो है वो कम हो जाएगा दूसरे. ओके. तो एक्स वाई इज इक्वल टू, हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी एज यूजुअल, इट विल नेवर चेंज. ओके. ठीक है. तो y प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1, अगेन मल्टीप्लाई y इंटू एक्स, दिस विल बी एक्स वाई, y minus 1, this will be minus y, 3 into x, this will be 3x, 3 minus 1, it will be minus 3. This xy cancel. Therefore 3x minus y equal to 3. Let this is the equation number first. In second step में क्वेश्चन क्या हो रहा है, कहता है कि यदि प्रत्येक रो में 3 स्टूडेंट कम हो जाते हैं, 3 स्टूडेंट को कम कर देंगे तो एक नया रो बनाना पड़ेगा. तो कहता है कि अगर 3 स्टूडेंट कम होते हैं तो रो का जो नंबर है 2 ज़्यादा हो जाता है. यहाँ देखिए x प्लस 2 मैं लिखा हूँ. ओके. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू y माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2. यहाँ पर जो होगा एक्स वाई एज यूजुअल रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये बार बार चेंज नहीं होगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई ही रहेगा. y into x, y into 2, this will be 2y minus 3x, minus 3 to the here 6, this xy cancel, 3x minus 2y is equal to minus 6. So solve x and y for result. Thank you. Have a nice day.